यूक्रेन में पिछले कई दिनों से कहर बनकर टूट रहे रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत तमाम देश खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन भारत इस मामले में बेहद सधे अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहा है। यहां तक अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भारत और रूस के बीच दशकों से बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन पिछले एक महीने से यूक्रेन में चल रहे रूसी तांडव के बीच बूचा शहर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने जहां पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं भारत को भी आखिरकार इस बार रूस के खिलाफ बोलना ही पड़ा। फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका फरवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया, लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिससे उस पर रूस के खिलाफ या समर्थन में वोटिंग करने का आरोप न लगे। इतना ही नहीं, मार्च में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो इस बार भी भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी तारीफ खुद रूस ने की थी। मगर जिस तरह की दर्दनाक तस्वीरें यूक्रेन के शहर बूचा से आ रही हैं, उसने लगता है भारत को भी अंदर से झकझोर कर रख दिया है। यही वजह है कि भारत ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है और रूस का नाम लिए बिना ही बूचा नरसंहार की कड़ी निंदा की है। यूएनएससी में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। भारत यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर काफी चिंतित है। यूक्रेन संकट का असर अब दुनिया भर में पड़ रहा है। इससे खाद्य और ऊर्जा सामग्री महंगी हो रही है। इसका असर सबसे ज्यादा विकासशील देशों पर पड़ रहा है। जब बेकसूर लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो, तो कूटनीति को ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। बंदूक के बल पर यूक्रेन के शहर दर शहर पर कब्जा कर रहे रूस के खिलाफ यूएनएससी में पहली बार प्रतिक्रिया देने वाले भारत ने बूचा में हुए कथित नरसंहार की जहां निंदा की, तो वहीं रूस और यूक्रेन को कूटनीति के जरिए मसले का हल निकालने की नसीहत भी दे डाली। बूचा नरसंहार पर क्या बोला रूस और यूक्रेन? जिस बूचा नरसंहार ने भारत को भी पहली बार यूएनएससी में रूस के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया, उस बूचा नरसंहार के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, मृत लोगों के शव बेसमेंट में मिले हैं और यह बात सामने आई है कि उनका गला घोटा गया और प्रताड़ित किया गया। रूसी सेना के युद्ध अपराधों को पृथ्वी पर इस तरह की बुराई का अंतिम मंजर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का समय आ गया है। हमारी सरकार यूक्रेन में रूसी सेना की ओर से किए गए हर अपराध की जांच के लिए एक विशेष न्याय तंत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। यूक्रेन ने जहां बूचा नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी तरफ खुद रूस ने इस नरसंहार से पल्ला झाड़ लिया है। रूस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, बूचा में हुए नरसंहार के पीछे रूसी सैनिकों का हाथ नहीं है। यूक्रेन में किसी भी आम नागरिक को रूसी सैनिकों द्वारा हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा। बूचा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वह यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों और मीडिया पर दबाव बनाने के लिए बनाई गई तस्वीरें हैं। रूस और यूक्रेन के इन बयानों के बीच आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनियों की ओर से यूक्रेन के बूचा शहर की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। इसमें बूचा नरसंहार की पूरी कहानी दिख रही है, यानी शहर की सड़कों में पड़ी लाशें, सुनसान सड़कें। जब इन सैटेलाइट तस्वीरों को स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो में से मिलाया गया, तब पुष्टि हुई कि ये बूचा की ही तस्वीरें हैं। 11 मार्च को एक सैटेलाइट तस्वीर का 2 अप्रैल की शूट की गई वीडियो से मिलान किया गया, तो यहां 11 लाशें उसी स्थान पर मिली जहां उन तस्वीरों में दिखाई गई थी। ऐसी ही तस्वीर 20 और 21 मार्च को भी जारी की गई थी, जिसके बाद से अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों ने जहां रूस पर दबाव बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी यूएनएससी में पहली बार रूस के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए बूचा नरसंहार की कड़ी निंदा की है। बहरहाल इन सब के बीच संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बूचा नरसंहार पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Speaker sir, we strive to ensure that foreign policy is a subject of maximum consensus in the country. Certainly that should be the case with a subject as important as Ukraine. And I was glad to see yesterday that was the case. I was also very pleased that 4 ministers spoke on this matter, because these ministers went to the neighboring countries, they participated in the evacuation operations,
and they brought a ground perspective, which was very important for the House to listen to. Honorable members would all agree that India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest, and by a national strategy. Let me dwell on each of these aspects before addressing some of the specific issues that were brought up by honorable members yesterday. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. Sir, many honorable members brought up the incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. Sir, the conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. Members are aware that in a complex and globalized world, every nation takes into account the reality of interdependence. Therefore, even as they express their position in words and deeds, they also adopt policies that safeguard the well-being of their population. As a result, we have seen, even in Europe, that energy flows continue despite tension. Similarly, a conscious effort was made to insulate the fertilizer market from volatility. There are numerous other measures in different domains, including financial and payment carve-outs. Even non-essential goods that have salience for individual economies have been factored in the equation. So what should India do in these circumstances? At a time when energy costs have spiked, clearly we need to ensure that the common person in India is not subject to an additional and unavoidable burden. Similarly, fertilizer prices have a direct implication for the livelihood of the majority of our population, and indeed for food prices for all of us. Even the security of the nation is at stake as we maintain our defense posture in the manner that the current security challenges warrant. All these, Speaker Sir, are legitimate pursuits of national interest by India. They are similar to what other nations are doing from their particular perspective. Attributing a political coloring to it is uncalled for, it is unfair. I do not even wish to get into which country is doing how much. Eventually, the numbers will speak for themselves. Additionally, there was a natural concern for our citizens, especially our students, who were trapped in conflict zones. The House will recall that I had made a suo motu statement on this subject. But some comments were made yesterday about Operation Ganga. I would like to respond to that a little later. Now, keeping these factors in mind, what should be our national strategy?